to your situation test, anything you can clear here, okay? So after my presentation, 1 minute. What did it take in the first 10 hours or so? But you got to give credit to users and also for making it so tough. Hold the lane, visible, and then hard lane. Okay, just wait. Situation test. Okay. Right now, I'm just going to share my screen. Okay. So, yes. So, what we are going to teach in the online classes and how you can start your preparation, both I'm just going to cover. Okay. So yes, we have so many resources जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम क्लासेस में देंगे आपको, लाइव क्लासेस एंड डिजिटल ई रिसोर्सेज जो भी है, अगर आप ज्वाइन करोगे, प्री निफ्ट सिचुएशन किट फॉर द एडवांस स्टूडेंट जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, 24/7 सपोर्ट, रात में मॉडल बनाओ, दिन में बताओ, दोपहर में बनाओ, आप कभी भी अपने मॉडल का रिव्यू ले सकते हो, वन टीम ऑलवेज विथ यू। क्योंकि बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पे करके सेकंड कोचिंग मेरी 2 या 3 साल से मैं देख रहा हूँ मेरी ज्वाइन कर रहे हैं, जब वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है लास्ट टाइम पे, यू नो सो वहाँ पे यही है कि फीडबैक नहीं देते, कुछ प्रॉपर बताते नहीं। एंड तुम देखना, मोस्टली तुम कहीं भी जाओगे ना, वो स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल बनाओ बेटा, सर्कल बनाओ, क्यूबिज्म बनाओ, दिस इज नॉट अ सिचुएशन टेस्ट। ठीक है, वो तुम लोग बचपन में ही बना लिए हो, तो ट्राइंगल बनाना, सर्कल बनाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि वो बेसिक चीजें बता देते हैं बस, मेन चीज बताते ही नहीं क्या क्या चीजें मैटर करती है। ठीक है, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन आवर ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑफलाइन क्लासेस बोथ, सो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज द रोड मैप शुड बी फॉर एवरीवन। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ योर क्वेश्चंस जो भी आप है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, प्लस फंडामेंटल्स क्या होते हैं। सिचुएशन टेस्ट इज नॉट ऑल अबाउट कि भैया उन्होंने बोल दिया कि एक रूम बनाना है, बना के चले आए, ठीक है, अरे देखने में नहीं, दिस शुड बी सम फंडामेंटल्स लाइक व्हाट यू आर जस्ट गोइंग टू टेक the inspiration, how you can using everything and material handling, सबसे बड़ा पार्ट। वो तो बहुत सारा मटेरियल देते हैं ना, तो जरूरी नहीं सारा मटेरियल ही यूज करो, राइट जगह पे राइट मटेरियल के यूज करने के नंबर हैं। समझ रहे हो, अगर उन्होंने स्ट्रॉ दिया है, कॉटन दिया है, वायर दिया है, सो अगर आप पेपर से ही सब बनाने वाले हो, टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, तो उन्होंने वो तुमको क्या फेंकने के लिए दिया हुआ है क्या? सो मटेरियल हैंडलिंग। सो अगर आप चेयर पेपर से भी बनाते हो ना, उस जगह पे कहीं और आप मटेरियल यूज कर सकते थे, उसके कोई मार्क्स नहीं है, चाहे जितना ब्यूटिफिकेशन करके चले आओ। ठीक है ना, सो मेन चीज है कि जो मटेरियल मिलेगा वी आर गोइंग टू टीच कि इस मटेरियल को इतने अच्छे तरीके से आप कहाँ यूज करो जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, वाह कॉटन का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ यूज हो पाएगा। अब नॉर्मली कॉटन आप लोग कहाँ सोचते हो यूज करना, ज्यादा से ज्यादा तुम सोचोगे कि भाई कुशन में लगा दिया, गद्दे पे लगा दिया, बेड पे लगा दिया, नहीं, देयर इज सो मेनी वेरिएशन जो कि आप कॉटन से भी कर सकते हो। दैट इज द एग्जैक्ट क्रिएटिविटी जो देखना चाहता है। नहीं तो आप खुद सोचो कितना इजी होगा ना सिचुएशन से सबके लिए, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ फैशन डिजाइनिंग कर रहा है सबको पता है क्राफ्ट क्या होता है, फिर तो सभी पास हो जाएंगे ना। बट क्राफ्ट सबको पता है, बट टेक्निक फंडामेंटल किसी को नहीं पता, मुझे पता है जीरो है सबका भी, क्योंकि लोगों को लग रहा है बस एक मॉडल बना के चला आना है, नहीं, मॉडल नहीं बनाना है। सेम चीज पहले आप भी तो सोचते थे कैट पोर्शन इज ऑल अबाउट द ड्राइंग ओनली, मेरी सर ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा? पढ़े हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं थे ड्राइंग में, सो दैट्स द ओनली रीजन। सो मॉडल मेकिंग एंड concept creation, what I was talking about, the concept creation, you should have a specific concept, whatever they are asking about the question, you should have a very nice concept, whatever you're just going to make it, every single things, whatever you're just going to paste it in your
model, there should be the concept, the reason behind why you are using this specific material in a specific area. You should have a proper concept, proper explanation, because at the last you have to give 100 to 150 words of proper एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल. तो आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे सर हम चार चेयर ऐड कर दिए, चार चेयर की चार चार टांगे लगा दिए, ये तो नहीं एक्सप्लेन करोगे ना, राइट? क्या पड़ेगा आपके कॉन्सेप्ट में? क्या इंस्पिरेशन लिया हुआ है? आपने ऐसा क्या दूसरों से तो किया हुआ है, तो दूसरों से किया हुआ है जब करोगे तब उनको बताओगे ना आप जाके क्या करके आए हो. तो वो हम है जो क्लासेस में सीखेंगे. स्पेस डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंस्पिरेशन, राइट, previous year students work, that is a plus point we have. टॉप 5 जितने भी बच्चे हमारे 40 50 60 प्लस में जो भी एडमिशन हुए हैं, वी हैव अ प्रॉपर अ नाइस मॉडल. उन्होंने है जो 1 घंटे के अंदर है जो क्या किया, कैसे वर्क किया हुआ है, ये सारी चीजें, वो सारे हम लोग सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे उनका क्रैक हुआ, उन्होंने क्या क्या चीजें की हुई है, राइट, ये सारी चीजें. सो वो भी हम लोगों को है जो देखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर रैंकर्स, जो टॉप रैंकर्स थे, उन बच्चों ने है जो क्या करके रखा हुआ है, राइट. Okay, so previous one, question discussion, model discussion, and most important is feedback. कितना भी अच्छा तुम मॉडल बना लोगे, मुझे दिखा देना, मैं उसमें कमियां निकाल दूंगा, तुम कहोगे सर सही बोल रही, ये कमियां थी. तो ब्यूटिफिकेशन इज नॉट द case. So we are going to cover everything in the classes only. Otherwise, I am providing monthly one free classes. You can join if you really don't wanted to join the continue classes, but you can get all the information free of cost monthly one classes. Okay. So yes, so there's a different type of questions they are going to ask, right? Different type of things, and they are going to give you 3 hours only. In the 3 hours, you have to make a one proper model, and you have to give a proper write up also. 3 questions पूछे जाएंगे, 3 है जो क्वेश्चंस में से एक आंसर देना है. There's are so many queries students were asking about, sir, in case the situation test date and some other important work date in the same time, how you will be able to join the situation test exam. So they are going to provide you 3 dates. You can choose any one date, like where you are comfortable, in which date you really wanted to give your exam, first day, second day, third day, and you have to choose any nearby NIFT campus, and you can go there and you can give your situation test exam. So that is not the case कि 3 दिन में तीनों दिन important class है, तुम्हारा bad luck समझो या कुछ भी समझो, that is your problem. 3 दिन एक दिन तो situation test दे सकते हो, right? तो वो जब भी आएगी date, we will inform through the Instagram and group and everything. So you have to just connect there. तो 3 घंटे में आपको चीजें करनी होगी. Type of material what they are going to provide, or how you can start to your preparation at home. Otherwise, if you're joining my classes, we are going to tell everything, like how much quantity they are giving you, which type of questions, because they are going to set everything. So they are going to set the materials also, the how much quantity they are going to provide you. You have to design a model in the specific, in the limited things, the limited material, you have to design a proper model. So this is the main situation. Otherwise, if they are giving you a proper material, भाई बोरा भर के उसमें भूसा भर दो, आप कार्डबोर्ड पूरा लगा दो, कीला ठोक दो, तुम तो मटेरियल का पूरा घर बना दोगे, राइट? But the main situation is you have to design everything in the limited, the materials, so you have to a best model, you have to design the limited material. Also, in the classes, I'm just going to tell you, in this specific material you have to use this quantity, and these type of material you have to use, and just you have to perform like how you are reacting on that specific topic. That is the main situation test. Otherwise, situation test is very easy if you can use anything in this word, right? कुछ भी छोप दिया जाके, ठीक है. कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड इज नॉट दैट थिक वन, ठीक है. थिक वाला कार्डबोर्ड नहीं होता है, हल्का सा कार्डबोर्ड, ठीक है. जो आप लोग देखते हो, पहले जो कॉपी किताब चलती थी, हम लोग उसको दफ्ती या पट्टा
मे बी उन्हें पीछे होता था ऐसा लूज सा थोड़ा सा कार्डबोर्ड, राइट? वो वाला कार्डबोर्ड मिलता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ज्यादा थिक भी नहीं होता है, लाइक यू कैन कट थ्रू योर सीजर वेरी इजली, ठीक है? हैंडमेड सीड, यू नो हैंडमेड सीड, कलरफुल हैंडमेड चीज आती है ना, वो जो पेपर देखा होगा जो बीच में सिकुड़ा सिकुड़ा थोड़ा सा होता है, जिसमें क्रिस्प पड़ी होती है, राइट? थोड़ा सा थिक होता है, रेड कलर, अलग अलग कलर्स का होता है, दैट इज द हैंडमेड सीड। A4 साइज सारा मिलेगा, ठीक है? A4 साइज। फैब्रिक, फैब्रिक आपको मिलेगा, वो जानते हो आप, जैसे कि कोई कपड़ा हम लोग डिजाइन करते हैं उससे पहले हम लोग एक मॉडल वो बनाते हैं, सैंपल, वाइट कलर का होता है ना, बकरम या फिर कुछ कुछ बोला जाता है, पता नहीं, मुझे नाम नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? सो वाइट कलर का मिलता है, A4 साइज का फैब्रिक आपको मिलेगा, ठीक है? ग्लेज पेपर, ग्लेज पेपर इज लाइक ग्लिटर पेपर, होता है ना, मिल जाता है, ये मतलब मटेरियल मिलते हैं। अब इनमें से सारे मिलेंगे कि नहीं, द मिक्स कॉम्बिनेशन विल बी फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स ओनली, ठीक है ना? तो इन्हीं सारी चीजों में से होगा। हाँ, ओके ओके ओके, आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली, ठीक है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हिंदी पोर्शन, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स एवरीथिंग, गॉट इट, ठीक है? यस, सो ग्लेज पेपर, kite paper, I'm just going to say this PPT in every group so that you'll get very easily all the materials list, okay? So you don't need to write here. I'll share everything, okay? Colored clay, the clay, bachcho wali kids clay, so they are going to give you clay, maybe they can give you the colorful clay also, otherwise they are going to give you the cutout of one clay only. It's only depend upon the state of the paper, aluminium foil, cotton, straw, ठीक है? Transparent sheet, the plastic one, OHP sheet, OHP sheet, the transparent one, OHP sheet they are going to, toothpick, mount board, ठीक है? Mount board baby, needle and thread, pins, the paper pins, okay? Beads, they can give you some beads, it's totally depend, they can give you some beads. Ice cream stick, long stick, yeah, it's long stick is like bamboo stick, the bamboo one, patli se aati na, clean one, the bamboo one. A wire, normal wire, like you can cut very easily through the scissor, or it will be the foldable wire, like you can mold according to your design very easily. Ivory sheet, ivory sheet is a part of the paper only, the white paper, the thick one, ivory, there's a two paper, the cartridge one and the ivory, this is the ivory, like the texture will be different, that's it, okay? Newspaper, obviously they're going to give you newspaper. Corrugated sheet, this is part of the paper only, different different texture, different GSM, so they are defining the paper, ठीक है? Gateway sheet, yes, rubber band they are going to give you, the colorful rubber band, ठीक है? Crepe paper, quilling paper, yeah, sometimes they used to give the quilling paper also, what is quilling paper, the stripe, colorful stripe, so they can give you, if you really wanted to do something with the quilling work, you can cut out from your paper also, but it will take so much time, so it's totally up to you. Okay, buttons, maybe glitters, like glitters. I don't think so. They are giving the glitter. This is wrong. Glitter paper. There will be the glitter paper. Okay, and ribbons. So these type of material they are going to provide you. Is still there must be so many confusions. Like there must be so many people. It's like why I didn't mention the thermocol, but they're not giving thermocol because you know very well thermocol has been banned in India, right? So that's why. Like before the 2 year, they used to give a thermocol also. Right now they are not giving. But I don't want you to tell like pass any comment because it's in India. They can give you anything after banning anything. So they had banned the plastic also, and still we are using plastic. They had banned the alcohol also in the Bihar. Still people are just getting alcohol. I don't know from where they are just creating alcohol. You know, so many things they already banned. Still, everyone is using. So there's no use of ban. Right? They banned tabaku also. I don't know from where they started again tabaku. So they can give you that the thermocol also. I don't know. Maybe God will give
गिव टू द निफ्ट, ओके बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, वही क्रिएट करके देंगे. गॉट इट? सो दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स दे आर गोइंग टू गिव यू. गॉट इट? So yes, type of questions. Which type of question they're going to ask you? The space design, right? So there must be so many questions like you have to design a space for. They can give you any celebrity, any celebrity like Silpa Shetty, Salman Khan. They can give. They can give. Otherwise, you have to design a space for the Bollywood celebrity. Good. Yes. Just wait. One ghost just came inside my room. Sorry, guys, my backend team is, very unexperienced. So that's why I'm charging very less. So they used to do these type of sit in my room. Okay, now you guys can get out. Okay, so space design. Okay, so space design is like they can ask you anything. So you have to design a Bollywood celebrity room, or you have to design a one cobbler room. You have to design a fashion designer space. Right, these type of questions they can ask. In the previous year questions they had asked, you have to design a room for influencer, राइट. इन्फ्लुएंसर के लिए कुछ डिजाइन करना, स्पेस, स्पेस डिजाइन फॉर द इन्फ्लुएंसर, product design. They can ask you different type of questions. First they can give you any problem, like this person is facing this type of problem, and you have to give a solution through your product, right? So that time you can give any solution. So you have to design a product, a redesign, a new design, whatever you wanted to do. Or they can give you, specific topic. You have to design a chair for the kids. You have to design one instrument for something, right? In the previous year they had asked something to related to this thing, the product. I like still I'm confused. Otherwise I'll give everything in the class only. Okay, so these type of question. Concept design is like they're not going to specify anything. Okay, like they are going to tell about one keywords, and you have to represent that keywords, like all glitters are not gold. This is the keywords. Now you have to prove this keywords through any model. So what you can do, you can make any monument or any sculpture. Like, have you seen there's just so many places there's a four ways coming, like tiraha or choraha, right? In the middle of the choraha there's a sculpture, or some, the heroes they used to make something like that, right? And some water favaras also there, right? So like that you have to prove. So you can design anything. Or there is just so many things, like you can design any model who can represent that keywords. Or you can make a VM also. What is VM? The visual merchandising. Have you seen, you used to go to the mall and there's a specific VMs for a specific brand like H&M, Zara, so they used to make a one window display to represent their identity and what they are offering, to represent the creativity, you know and the Benetton also used to do, Zara, ho gaya, H&M, right? There's just so many brands used to make a proper VM. So I'm just going to tell everything, like what. There's just so many topics. This is not one topic. There's I think 14 to 15 topic you need to work. You know, so you have to design a concept. These type of questions they are going to ask. Judging criteria, the material handling skills. I already explained you, like for which basis they are going to judge you. The material handling skills, right? Design and innovations. How you can design and innovate something new. Not like that you just copy and paste from somewhere else. ठीक है ना? So ऐसा नहीं कर सकते हो. ठीक है? एक मिनट.
ठीक है. Creativity and concept, there should be some concept, not like baseless model. You're just going to make it like there's no concept. Whatever they are going to ask, you just copy and paste it there only. So don't need to do these type of things. Okay. So ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, है ना. Also neat and clean, this is the main problem with you guys. Like, you guys are not going to do anything neat and clean, to be honest, because after doing all the efforts you're just going to do everything messed up. I don't know why, so neat and clean should be. So I'm just going to give you proper tips and tricks how you can neat your model and clean your model, so that you'll get a very good marks. Because after doing everything, if your model is not neat and clean, they're not going to give you proper marks, to be honest. Because that doesn't matter how creatively works you did in your model. If your model is not neat enough and clean enough, means you don't have a skill to make anything, and you just wasted your 2 hours and 3 hours, right? So that's the only reason your model should be neat and clean. So make sure whatever you are doing, the model should be very neat and clean. Time management is the key part, because I am taking classes since 6 to 7 years, and I have seen that there are so many students, a very brilliant student, they are lacking in the time management. Because the thing is, this is your situation test only. So first, I know you guys, you have so many curiosity. I don't know why. You have so many curiosity, but you have to make sure where you need to, open your curiosity and where you need to stop yourself. This is your exam. Think whatever you are going to make on time only. So what is the main problem with you guys? When you're just going to read the questions, and that time only you're like, I don't know what you think, like, I'm just going to put this, that, so that my models become so good. Not like that only. That doesn't matter. So you're just thinking so much, and you don't have that sufficient time to create everything in the one model, right? So prioritize your things. Like, first what you have to do, so that if you don't have a time, right, and examiner is going to ask your copy, so that time your model is not going to waste it. At least you have to complete your model on time. Please mute yourself. Please mute yourself. Yeah, Suhana, Nashreen, please mute yourself. Can you mute yourself? Yes, thank you so much. I'll ask, like, if you have any query, I'm just going to clear every single query, so tension not. Okay, time management is the key, guys. Time management बहुत जरूरी है. अगर आपका time management, you wanted to learn or you wanted to see how much good in your time management, so you have to make a one chair and one sofa. If your one chair and one sofa is going to make under the 5 minutes, the 5 minutes for the sofa, 5 minutes for the chair, then you are good enough for the situation test. If you're not going to make it in the 5 minutes, I'm just telling you the maximum things, because you guys not experienced. If you are going to make the sofa and chair in 5 minutes, then you can clear this exam very easily, like in the time management. If not, start your preparation right now, because in one model, in the room model, there's just so many Sorry, things sir. happening. Sorry, sir, for disturbing. Actually, I am just sharing a form. Hmm. Actually, dear students, please fill this form. I am just sharing the link in the Okay. chat box. Okay. Okay. So yes, guys, this form is for those students who didn't join the classes and still want free classes, also monthly one free classes, whatever I'm providing, and free stuff, as well as who have a query, who wanted to join my classes, wanted to know about more about the classes. So please fill this form. Chat box में गया है, जिससे कि टीम आपको कॉल कर लेगी. Whatever query you want, my team always will be there for you guys. Okay, so please fill this form. I'm just giving you 2 minutes, then I'll continue the classes and I'll give you all the things, like how they are going to ask and how you have to approach these type of question. Okay. So only those students who have the query, okay, who have the queries, not for those students who already joined. And for my batch, I think, Swati ma'am, how much seat is left for the advanced? Six or four? Sir, only 6 seat अभी Six. बनाज और 6 या 5. Okay, so yes, so please fill this form. Swati ma'am will connect you for my batch only, because
I'm just going to start this batch anyhow in this week only. Okay. So I already gave you the information about the materials. So you guys just start collecting the material. Also for the advanced student, you already going to get the Ignite India kit also, right? So you'll get so many sufficient material there also. But I would like to suggest whatever you are going to make now, just buy some stuff for your practice, because in the Ignite India we are providing all the mock test and proper situation mock test also, so just use those mock test after practice so many things, like वो उसको बाद में थोड़ा सा संभाल के रखना, right? After 1 month we will use those stuff. Hmm. I'm just giving so please like this message who just fill this form, please like this message. Okay, so chat box में है, if you have any query regarding the free classes, and also there's a regular and advanced one also, so just tick anyone, my team will connect with you, you can discuss whatever you wanted to discuss. Otherwise, if you already connected with the specific team, like we have a team like a Swati ma'am, Sweta ma'am, Bhavna ma'am, if you already connected with any counselor, so you can connect directly to the team also, and if you're just coming direct from my YouTube channel, so you have to fill this form. Swati ma'am will connect you as soon as possible. We are going to start the session. Okay, so please isko fill kar do aap log. I'm just giving extra 5 minutes and then I'll continue my lecture. Please guys, turn on your camera first. I'm just going to click one picture. Please turn on camera. जितने जाना खुल सकते हैं. Fast, 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 fast. Camera on. जल्दी से करो, जल्दी. अच्छा 5 मिनट खोल लो, 5 मिनट. मिस इंडिया के लिए मैं नहीं भेज रहा हूँ फोटो. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, टेंशन मत लो. हाँ, पता फोन आ गया. यू आर सिलेक्टेड फॉर मिस इंडिया. बेहोश हो गया तुम लोग सुनकर. Okay. So yes, I hope you already fill this form. Otherwise, just connect with Swati ma'am, Sweta ma'am, and Bhavna ma'am also, like with whom you already connected. So yes, yeah. So the most important topic is like the space design, because all the years they are going to ask you. So how you have to design the model. Okay. So the exact model you can design in 1.5 hours. Yes or no? Just in the chat box. In the chat, the exact model. Exact model. Yes or no? चैट बॉक्स में बताओ जाके यस और नो. और जो यस बोलेगा ना, उससे मेरी टीम कनेक्ट करके उसे बनवाएगी लाइव. ठीक है. यस. और जो बना लेगा फिर मेरी जगह उसी से क्लास दिलवाएंगे. भाई भाई शुड आई पुट माई एफर्ट्स इफ समवन इज. यस और नो? चैट बॉक्स, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ चैट बॉक्स? CHAT. यस. गुड प्रिंस, मेरी टीम तुमको तुरंत ही कनेक्ट करेगी, कुछ सेकंड के अंदर ही उठवा लेगी तुम्हारे घर से. गुड अनिक्सा, यू आर गुड, आई नो यू आर गुड. See, there's no same if you're telling no. I don't know why, what the wrong with you people is to say no. Yeah, obviously. It is very difficult. In my time also, I attempted NIFT 2 times. The first time, I was thinking I am a hero. That's why I didn't get the NIFT. And the second time, and the second time, I was thinking, no, NIFT is a hero. So that's why I put it my 200% and I joined the classes for situation test and all. And that time I just realized, no, I was not a hero. NIFT was a hero. So then I selected for the NIFT Delhi. So that is the only reason, because I was very good in the craft work. Since my childhood, I used to make so many things, the craft, the painting, and origami, and there's so many things, I used to make in my house. So I was like, what is this? This is nothing for me. So when I got the paper,
I just lost everything, my childhood also. What I was doing in the childhood. I wasn't able to do proper a chair because if something is making inside your house, that is very different thing. If something you just inside the exam hall and making something, that pressure is very different. I wasn't able to, cut a proper seat, and my hand was shaking. I don't know why. Even I was very good at the, paper cutting and the model making and everything. So that's the only reason. So don't think you are smart enough. NIFT is very smart. हाँ प्रिंस, तुमने तो क्लास ली थी ना, इसीलिए तो तुम इस साल भी मेरे साथ हो। काश तुम अच्छे से क्लास ली होते पिछले साल। नहीं 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 नहीं, सिचुएशन टेस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा था, बट ये है। हाँ, ठीक है। So in the model, what the things you have to see, the shapes, the clay modeling, how you can use, see clay का कितनी सही जगह यूज किया गया है ना, कितना सही उससे मॉडल बनाया है। So we are just going to tell about, only model is not going to put your efforts. You have to design the whole model, exact कहाँ पे मटेरियल क्या लगेगा। ओके, साइड में तुमको दिख रहा होगा एक मेज रखी होगी। I can make this maze in only 2 minutes. You know, the bed don't need to paste anything. I can make the bed. So I have the techniques in some minutes only. The perfect one. So that's the only reason. ये पूरा मॉडल आई कैन मेक, आई थिंक, हाँ, 1 घंटे के अंदर मैं बना लूंगा बहुत इजी से। एंड मैं मुझे 2 घंटे मिलने वाले हैं। सो 2 घंटे में तो और भी चीजें आई कैन ऐड समथिंग न्यू। So those type of technique I'm just going to tell you, like how you can make anything very quickly and easy, right? So everything is going to put a word. ओके, सो ये मैंने एक टास्क दूंगा तुम लोगों को, सबको दूंगा, ठीक है। एक क्लासेस में और लूंगा, ठीक है, फॉर फ्री बच्चे, नहीं तो तुम लोगों की तो चलने लगेगी क्लासेस। ये मैं सबको दे रहा हूँ, ठीक है। डिजाइन अ स्लीपर फॉर अ किड्स, ये बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में। इट्स फॉर एवरी वन, एंड दिस लिंक आई एम जस्ट गोइंग टू, दिस क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। So who are going to join this class, who is just going to fill this form for non-paid, like जिन्होंने पे नहीं किया है and still you wanted to join the classes, please fill this form. Swati ma'am, can you send this link again in the chat box? Okay. Okay, sir. यस। सो ये फॉर्म फिल कर दो, स्वाति मैम आपको है जो भेज देंगी लिंक। ये मैं कल ही या परसों लूंगा, ये ग्रुप में नहीं आएगी लिंक। मेक श्योर this is not going to come, Swati ma'am, in the publicly. Only specific bachas who just going to fill this form, non-paid. Otherwise, who already paid for the classes, उनको आ जाएगी। हाँ, हाँ। क्योंकि तुम लोग तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो ना, फीस पे कर दिया इसलिए। ठीक है। So it's okay, it's okay. सर थैंक यू सर मेरी Yes. सिचुएशन समझने के लिए। Yes. नो So सर अभी थोड़ा फाइनेंशियल है क्राइसिस इसलिए। So we are always हाँ there. सर। So please discuss with your counselor. We are always there for everyone, because our motto is to get a best result. अच्छी रिजल्ट चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करो। सी सर रुपए, यही इसके बारे में ही आपसे बात करना चाहती थी। आपने विल पर टॉक, स्वाति मैम से कनेक्ट करो, ठीक है। विल हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है। कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। सो द मेन रीजन इज लाइक, सी रुपए, पता है कब खर्च जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, फीस कब खर्च जाती। सी मैं भी कोई बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करता। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मेरे लिए एक एक रुपए बहुत था। लाइक हाउ माय मॉम यूज्ड टू यू नो arrange the money or stole the money from my father pocket, we can say. So how she managed the things, how she used to give me a money so that I can live my dream, so that मेरे पापा को कोई भी चीज बता दी जाती थी, तो उनको मतलब 50 की चीज भी उनको बताई जाती, ये 2 रुपए की है। माई फादर इज लाइक वेरी हैप्पी, वाह इतने सस्ते में कैसे काम हो गया। सो माई मॉम इज लाइक कि कैसे भी करके उनको पता था कि पापा का मेरा रहता है रुपयों का लेकर, बिकॉज ही वॉज ए फार्मर ओनली। तो मेरी मम्मी थी कि रही तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो आई नेवर compromise विथ माई एजुकेशन। सो मेन प्रॉब्लम इन टूडेज जनरेशन इज लाइक, यू गाइज हैव मनी टू बाई आईफोन, यू नो आईफोन के लिए 4 दिन खाना नहीं खाओगे, घर वालों से लड़ के बहस कर लोगे, अरे घर छोड़ देंगे, जमीन जायदाद छोड़ देंगे अगर आईफोन नहीं आया। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, पता चल रहा है अरे सर मम्मी की प्रॉब्लम चल रही, फैमिली प्रॉब्लम चल रही,
दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। अगर प्रॉब्लम सुधारनी है फैमिली की, तो आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सो इस वजह से आपको, अगर जो भी आप फीस पे कर रहे हो उससे दुगना तिगुना, इफ समवन इज गिविंग यू, जस्ट गो फॉर इट। यू नो बिकॉज आजकल पे करने के बाद भी कोई नॉलेज नहीं देता है। वॉट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जो कि प्रिपरेशन, निफ्ट, एनआईडी, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, कोई भी आपको केवल प्रिपरेशन ही करा दे तो बहुत बड़ी बात है। हम प्रिपरेशन छोड़ के, वो तो होती है, लाइफ में आपको कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चीजें चाहिए वो भी बताते हैं। कल ही मेरे पास बच्चे आया, अच्छा मुझे कल पता चला, इन निफ्ट कोलकाता वी हैड 12 स्टूडेंट। Like I was shocked really, because one person just called me. He just going to end the jury, and he was in NIFT Kolkata, and he called me, sir. Like I used to call you like before, but I couldn't get a time, so I thought I need to connect with you. After 1 year, he called me, Pratham, and he's like, sir, like what you taught in the class, to be honest, in the 1 year, I didn't listen what my faculty is telling me, because I know already what I need to do on that specific assignment. Like whatever you teach, that was not the preparation, that is above of the preparation. Like the whole my classmate is like how to start this assignment, how to do these type of things, and I already know what to do in these specifics the topic. So I'm just going to tell everyone how to start, and everyone is asking how you already know these type of topics and all, बिकॉज आई कवर्ड इन द क्लास ओनली। सो जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे 4-6 साल का एक्सपीरियंस में पढ़ाता हूँ, मतलब बच्चे को पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको पहले से ही पता हो। तो प्रिपरेशन, क्योंकि जमाना फास्ट हो रहा है ना, यू you नो हम लोगों को क्या होता था, भाई डिग्री मिलेगी तब सोचेंगे हमारा पैकेज लगेगा, पता चला आज के छोटे छोटे बच्चे दे स्टार्टेड अर्निंग। सो इफ आई एम नॉट गिविंग यू दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो यूज ऑफ माई स्टार्टिंग द क्लासेस एंड ऑल। फिर तो मैं इंडस्ट्री में कुछ हटके दे नहीं रहा हूँ ना, इफ आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग्स, द कोचिंग एंड बिजनेस वन, so there's no use of to do designing, to be honest, so this is not a business, to be honest। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, एंड मेरी पूरी टीम बहुत दिल से एफर्ट्स डालती, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज द फैमिली ओनली। एंड एक एक बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, एंड फिर 2-3 बच्चे ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, देन आई गॉट टू नो देयर इज अ 12 to 13 बच्चा इन निफ्ट कोलकाता। ओ माय गॉड, आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने सबके कॉन्टेक्ट सेव किए। अब मेरे नेक्स्ट ईयर कोई भी बच्चे जाएंगे, कहेंगे ये हैं, इनसे कनेक्ट करो जाके, एकदम लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, हमारे ही बच्चे हैं, सो दैट्स द ओनली रीजन कि आप हमेशा प्रिपरेशन और इन सब से हटके सोचोगे ना, रुपयों से हटके सोचोगे, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको ये लगा रहे सर आप ये कह रहे हो वहाँ इतने का, जन देन गो देयर ओनली, बिकॉज माई एनर्जी, माई एफर्ट्स इज वेरी डिफरेंट। वॉट एवर आई एम जस्ट सेलिंग ना, दैट इज दैट, लाइक जो होता है ना शेयर मार्केट में, इतना लगा तो इतना मिलता, तो वही वाला सीन है, सो वो जिनको समझ में आता है वो करेंगे, नहीं समझ में आता दैट इज योर प्रॉब्लम। अदरवाइज मेरे जो बच्चे मुझे समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि व्हाट आई एम ऑफरिंग। गॉट इट। सो डिजाइन अ स्लीपर फॉर अ किड, ठीक है, बच्चे के लिए एक चप्पल बनानी है, नो टाइम लिमिट। हाँ, मतलब नो टाइम लिमिट डजंट मीन्स आफ्टर 1 मंथ यू आर लाइक कि अरे सर ठीक है बन गई मेरी चप्पल, नहीं। 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, ठीक है ना, 1 घंटे 2 घंटे जितने लेना है, ये बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में। रिफरेंस भी दे दिया, देख रहे हो, मेहरबान हूँ आज मैं तुम्हारे ऊपर, रिफरेंस भी दे दिया, यही रिफरेंस तुम डिट्टो बना के ले आओगे ना, मुझे बस टेक्निक देखनी है, ठीक है। यही डिट्टो ले आओगे, मैं तो एकदम मिठाई बरवा दूंगा मेरे मोहल्ले में, ठीक है। यस, क्लियर है, ऐसी रिफरेंस है, आपके कुछ रिफरेंस आप लगा लेना है। यूज क्या करना है, आप अभी तो पेपर ही और फेविकोल यूज कर लेना, ठीक है। पेपर एंड फेविकोल, कलरफुल होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वाइट कर लेना, मुझे वो नहीं, बस मुझे टेक्निक जानना है कैसे आप बना रहे हो, क्या हो रहा है ना। और एक बार टाइम लिख लेना जब भी बना रहे हो। जिनके पास Sir, can we even use chart paper? एनीथिंग यू कैन यूज, दैट शुड बी पेपर ओनली, ओके। Okay, sir. Yes, sir. वन वन सेकेंड, 1 सेकेंड।
ओके, सो ये स्लीपर बनानी है, पेपर ही यूज करना है, कलरफुल पेपर जो भी है, फेविकोल है ना, जो भी, यही बस पेपर से ही मुझे जानना है, ठीक है। सो ये करना है. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट फॉर न्यू स्टूडेंट हु जस्ट नो अबाउट अस कि what we have. So we have a two classes, the regular one, the advanced one. ठीक है. So in the regular classes, weekly three classes will be there. ठीक है. Three mock tests, recorded classes, everything. I'm just going to clear it out. Everything I'm just going to teach in the regular also and the advanced one also. ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. The time problem, 1 hour class in the regular, in the advanced there's a unlimited hours. 2 घंटे 3 घंटे, जब तक मैं सारे बच्चों से बात नहीं कर लूंगा, चीजें नहीं कर लूंगा, तब तक नहीं होगा. इसमें भी होगा, इसमें ग्रुप में चीजें होंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है. फीडबैक भी इसमें ग्रुप में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. एडवांस में एक दिन केवल फीडबैक होगा, ठीक है, मतलब क्लास के साथ नहीं, एक दिन केवल फीडबैक होगा, ठीक है. उसके बाद से आपकी प्रॉपर 6 to 7 डेज क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 5,000 तक की पूरी किट आपको मिलेगी, जिसमें सिचुएशन टेस्ट का पूरा मटेरियल, पूरा सेट, पूरा लाइव एक एग्जाम्पल जैसे होता है ना, आपको निफ्ट प्रोवाइड करता है एक पॉलीथीन में, वैसे 4-5 सैंपल पेपर्स भी मिलेगा आपको, और बहुत सारा मटेरियल वो आपके घर भेजा जाएगा, ठीक है. सो वो 5,000 का है. बट इसके साथ आपको है जो ऑफर में कुछ है, वो आप अपनी फैकल्टी से बात करना. तो एडवांस कोर्स इज 10,000 रुपीज, रेगुलर कोर्स इज 6,000 रुपीज, ठीक है. एंड कब तक के लिए? जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं, ठीक है. जैसे कि सेम चीज क्या हुआ था प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, हमने 2 घंटे 2 महीने ढाई ढाई महीने क्लासेस ली थी, रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था बच्चों का, उसी फीस में मुझे लेनी पड़ी. सो ये भी है. सो whoever is going to join the classes right now, fees will be same. After the result also fees will be remain same. So there's no वो की चेंजेस आएगा, कुछ भी फीस सेम रहेगी, ये आपकी चॉइस है, आपको कब ज्वाइन करना है. गॉट इट. फॉर दिस इंफॉर्मेशन प्लीज आस्क विथ माय फैकल्टी वॉट एवर प्रॉब्लम व्हाट इज, माय फैकल्टी विल फिक्स योर प्रॉब्लम. अदरवाइज तो कोई फिक्स नहीं कर सकता है. अगर आपने जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम बनाई हुई, उसको कोई फिक्स नहीं कर सकता है. यू नो इफ यू हैव a genuine problem, my faculty will be always there कि कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो, क्या नहीं है, अगर जेन्युइन में पढ़ना चाहते हो. अदरवाइज देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू कैन पे 500 एंड स्टार्ट योर क्लासेस आल्सो, यू कैन गो देयर आल्सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है. सो इसलिए है जो, यस वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ये मैं पूरी पीपीटी भेज दूंगा, सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ पे है जो चीजें आपको पता लग जाएगी. गॉट इट. सो यस, राइट नाउ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, we have so many queries in my mind, yes, Coca-Cola, Pepsi, Harpic, what are the things I need to use in the models, so you can ask right now. हाँ, बेफिक्र होके. एक बच्चे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, पहले उसने खूब कुछ मतलब पूछ लिया मेरे काउंसलर से, फिर बोला कि सॉरी फॉर माय किड्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन किड्स क्या होते हैं यार, ऑब्वियसली यू आर पेइंग फॉर इट, राइट, पूछो दिल खोल के. हाँ, चलो, प्लीज रेज योर हैंड इफ हैव एनी क्वेरी एंड आई विल क्लियर एवरीथिंग. गॉट इट. फर्स्ट यू हैव टू रेज योर हैंड. देयर इज नो क्वेरी. व्हाई? तुम लोग कहीं आईआईटी का पेपर देख के तो नहीं सिचुएशन टेस्ट में आ गए हो, तभी कोई क्वारी नहीं है. हाँ, वैसे डिजिटल हर एक चीज है, वो एक दूसरी बात है. और मैं हर एक टॉपिक को ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम्हारी क्वारी रह ही नहीं जाती है. बताओ क्या यहाँ मसला है. अनिष्का इज लाइक, हाँ सर सही बोल रहे हैं. तो कल से अब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम ही लोगों से मैं एक्सप्लेन कराऊंगा. है ना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मुझे लगता पहले मैं बोल लूं छक के, जितना भरा पड़ा है मेरे पास माल, पहले उसको निकाल दूं, फिर मैं अपना है जो वो करूं, ओवर एक्सप्लेन. या गुड. चलो, आई होप ये पॉजिटिव वे में ले रहे हो, ये निगेटिव तो नहीं मुझे टोन मार रहे हो, अरे आप तो बहुत है बोल देते. आई डोंट केयर, कुछ भी बोलो, घंटा फर्क पड़ता मुझे, मुझे बोलना है तो बोलना है. चलो कोई नहीं, कुछ भी हो, आप लोगों का फायदा होना चाहिए. सो कोई क्वारी नहीं है, एवरीथिंग इज सेट फॉर द स्टूडियो टेस्ट. फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फॉर द एनआईडी स्टूडेंट. हाँ, ये तो भूल ही गए कि एनआईडी में क्या होता है. देखो, NID is also like that, the situation test, but the questions demand is very different. They are going to ask you some movable product also.
जैसे उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि यू हैव टू डिजाइन अ वन टॉय एंड उस टॉय को आपको ऐसा फंक्शन बनाना है कि फूक मारने पे ज्यादा दूरी तय करे. Yes, these type of questions they are going to ask. Or like you have to design a one